Hello everyone, welcome back. In previous lecture, I explained about the various temperature measuring instrument and the classification of temperature measuring instrument. Let us recall about it. The first I explained the measure types that are the glass thermometer, then pressure gauge thermometer. Thermometers you have seen for if you have fever. You might have used the glass type thermometer for temperature measurement. Pressure gauge thermometer you might have seen in the laboratories. Okay. Next is the differential expansion thermometers, then electric resistance thermometer, thermocouple, optical pyrometer, radiation pyrometer. Radiation and optical pyrometer are non-contact type. Okay. Then there is the fusion calorimetric pyrometers and color temperature chart. Now in today's lecture, I will explain about the various types, that is the liquid type, liquid filled thermometer. First, the remaining topic of previous lecture was the type which are classification or based on the electric uses, that was the non-electric and electric. यानी कि जो सेंसिंग टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन करेगा या नहीं करेगा, उसके बेसिस पर उसके दो टाइप्स है क्लासिफिकेशन, नॉन इलेक्ट्रिक टाइप एंड इलेक्ट्रिकल टाइप. In non-electrical type, we can consider the liquid, vapor pressure, and gas thermometers. While the electrical is the electrical resistance pyrometer, then the thermocouple pyrometer, total radiation, photoelectric, and optical pyrometers. These are the electrical methods for measuring temperature. Now, in non-electric, some are more, that is the bimetallic strip, refractory cones, paints, and crayons. These are the non-electric methods. We will start off with the first. The term thermometry is sometimes applied without any scientific basis to temperature measurement up to about 350 degree centigrade. The various comparison between the liquid in glass, then field systems, that is the metal, then resistance bimetallic metals, then thermocouples, pyrometers. The scale is shown, and pyrometry to measurement of high temperatures. The thermometry is applied without any scientific basis to measuring temperature up to 320 डिग्री सेंट 325 डिग्री सेंटीग्रेड. और जो पायरोमेट्री है वो हायर टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज होती है. सो ये चीज़ आप याद रख सकते हो कि पायरोमेट्री और थर्मोमेट्री में डिफरेंस क्या है. तो बेसिकली जो थर्मोमेट्री है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होगी, वो कोई भी साइंटिफिक बेसिस के बिना 325 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम थर्मोमेट्री यूज़ करते हैं, और जो हायर टेम्परेचर है वहाँ पे पायरोमेट्री यूज़ करेंगे. और summary of operation range of different temperature measuring devices are shown. यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो डिफरेंट, यहाँ पे सपोज लिक्विड इन ग्लास दिया गया तो उसके अंदर जो वेरियस फ्लूइड हम यूज़ कर सकते हैं वो है पेंटेन, टोल्यूइन और मर्क्यूरी. जो मर्क्यूरी की जो टेम्परेचर रेंज है वो ज़्यादा है. Similarly, field systems, that are the metal, then there is the resistance bimetallic strip. Bimetallic strip डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल की होती है. ठीक है, अगर सेम मटेरियल की बनाई है, ठीक है, जैसे कि निकल की या फिर प्लेटिनम की, जो प्लेटिनम की मेजरिंग रेंज है वो ज़्यादा है. सेम वे इनवार ब्रास यूज़ कर सकते हैं. उसके अलावा निकल आयन एलॉय, फिर सिरामिक्स हो गए, और जो कॉपर कॉन्स्टेंटेंट है वो थर्मोकपल के लिए यूज होंगी. वहाँ पे डिफरेंट के लिए डिफरेंट मेजरिंग रेंज होगी.
Now the first instrument is the liquid in glass thermometer. Liquid in glass thermometer is one of the most common type of temperature measuring devices. The unit consists of a glass envelope, a responsive liquid, and indicating scale. So there is very simple, you can see the construction. Responsive liquid means our mercury, alcohol, and other liquids that are used for measuring the temperature. Now the envelope comprises a thick walled glass tube. यहाँ पे जो ग्लास ट्यूब है वो थिक वॉल्ड होगी विथ कैपिलरी बोर्ड इन इट, जो कैपिलरी है वो उसके अंदर बोर की गई होगी, एंड अ स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल बल्ब फिल्ड विथ लिक्विड। जो भी स्फेरिकल या फिर सिलिंड्रिकल बल्ब है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे, filled with liquid. Now the safety bulb, you can see a stem is there, temperature scale, capillary tube, liquid column, and the temperature sensing bulb. So this is very simple construction of liquid in glass thermometer, most commonly used. Now the two parts are filled together and the top end of the capillary tube is sealed. The size of capillary depends on the size of sensing bulb, responsive liquid, and desirable temperature range of instrument. हमको कितनी रेंज में टेम्परेचर मेजर करना है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो कैपिलरी है वो हमको कितनी साइज में चाहिए। वो अनदर वे में जो सेंसिंग बल्ब है वो कितनी साइज का होना चाहिए, फिर जो भी रिस्पॉन्सिव लिक्विड है वो उसके अंदर कितना चाहिए, तो वो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। चेंजेस इन टेम्परेचर विल कॉज द फ्लूइड टू एक्सपांड एंड रेज द स्टेम। जो भी चेंजेस होंगे ठीक है टेम्परेचर में, वो क्या करेंगे, जो भी फ्लूइड है वो उसको एक्सपांड करेंगे और जो स्टेम है उसको रेज करेंगे। सिंस द एरिया ऑफ द स्टेम इज मच लेस देन द बल्ब, द रिलेटिव स्मॉल चेंज ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम विल रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट फ्लूइड राइज इन स्टेम। जो ये वाला पोर्शन है दिस इज अवर द स्टेम पोर्शन, द मार्क इंडिकेटेड पोर्शन। यहाँ पे जो ये एरिया है वो ज़्यादा है, तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज होगा और ये टेम्परेचर यहाँ पे ये जो लिक्विड है वो राइज करेगा इस टैंक के अंदर। द लेंथ ऑफ मूवमेंट ऑफ फ्री सरफेस ऑफ फ्लूइड कॉलम सर्व्स बाय प्रायर कैलिब्रेशन टू द इंडिकेट द टेम्परेचर ऑफ बल्ब। जो भी लेंथ ऑफ मूवमेंट है फ्री सरफेस की, लिक्विड की या फिर फ्लूइड कॉलम की, वो सर्व करेगा बाय प्रायर कैलिब्रेशन टू इंडिकेट द टेम्परेचर ऑफ बल्ब। हमको सबसे पहले वो इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करना पड़ेगा विद स्टैंडर्ड रेफरेंस, यानी कि कितनी फ्लूइड जो है वो राइज होना चाहिए फॉर पर्टिकुलर राइज इन टेम्परेचर। यानी कि सबसे पहले हमको कोई टेम्परेचर नॉन होना चाहिए कि इस बॉडी का टेम्परेचर इतना है, इतना इंक्रीज होने पर इतना फ्लूइड जो है वो राइज हो रहा है। सो उसके अकॉर्डिंग हम कैलिब्रेट कर सकते हैं और जो स्केल है वो बना सकते हैं। जो भी लेबोरेटरी वर्क है, लेबोरेटरी वर्क थर्मोमीटर्स हैव स्केल engraved डायरेक्टली ऑन द ग्लास स्टेम, while the industry type have separate scale located adjacent to stem। अभी लैब के अंदर जो भी थर्मोमीटर्स है वो बेसिक टाइप ऑफ थर्मोमीटर्स होते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि ग्लास के ऊपर ही जो स्केल है वो डायरेक्टली एनग्रेव किया जाएगा, और जो इंडस्ट्री टाइप है उसके अंदर सेपरेट स्केल एडजेसेंट टू स्टेम इज गिवन so that we can measure the temperature। Okay, now quite often the top of calibration tube is also bulb shaped to provide safety feature in case the temperature range of instrument is inadvertently exceeded। अभी जो ये टॉप पोर्शन में आपने ये राउंड सर्कुलर बल्ब देखा, ये सेफ्टी बल्ब प्रोवाइड किया गया है कि अगर इन केस
ये टेम्परेचर यहाँ पे जो लिक्विड का है वो बहुत ही ज़्यादा राइज हो रहा है, ठीक है। उसकी वजह से ये जो लिक्विड कॉलम है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे सेफ्टी पर्पस के लिए ये सेफ्टी बल्ब प्रोवाइड किया जाएगा। द thermometer bulb is usually filled with mercury. It has the advantage of broad temperature span between its freezing and boiling points, a nearly linear coefficient of expansion, a relative ease of obtaining it in a very pure state, and it is non-wetting of glass characteristics. यहाँ पे जो मर्क्यूरी है वो सबसे ज़्यादा थर्मोमीटर्स के लिए यूज़ होने वाला मटेरियल है। भी उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं कि जैसे ही टेम्परेचर राइज होगा तो जो मर्क्यूरी की डेंसिटी जो है वो क्या है, वो डेंसिटी उसकी ज़्यादा है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसका राइज टेम्परेचर कम होगा और जो डिस्प्लेसमेंट है वो थोड़ा कम होगा एज कम्पेयर टू वाटर और अदर फ्लूइड। सो वी कैन हैव द हायर रेंज ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट, दैट जो उसका फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बहुत ही ज़्यादा है। सो हमको रेंज है वो ब्रॉड मिलेगी फॉर मर्क्यूरी। Now, nearly linear coefficient of expansion, relatively ease of obtaining it, and very pure state and non-wetting glass. जो ग्लास है उसको वेट भी नहीं करता, ठीक है। Now, this is prevented by filling the space above mercury with नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड अंडर हाई प्रेशर। यहाँ पे जो भी थर्मोमीटर के अंदर जो मर्क्यूरी है वो फिल्ड किया जाएगा, उसके ऊपर की जो स्पेस है वो नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज़ करेंगे। अभी उसका रीज़न है कि जो नाइट्रोजन है वो क्या है, नॉन एक्टिव है, मतलब वो रिएक्ट नहीं करेगा, वो रिएक्टिव नहीं है कि वो मर्क्यूरी के साथ रिएक्ट करके कुछ डिफरेंट गैसेस फॉर्म करे एट अंडर इवन एट अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। दिस raises the boiling point and allows the temperature up to 610 degrees centigrade to be measured. However, in many industry applications, the escape of mercury through breakage causes the considerable damage to the products, and this may necessitate the use of other liquids such as alcohol, pentane, and toluene which do not cause contamination। यानी कि हम ऐसे गैस लिक्विड्स यूज करेंगे कि जो कंटामिनेशन ना फॉर्म करे। These liquids are also used for temperature measurement below the freezing point of mercury। जो भी हमारा मर्क्यूरी है उसका फ्रीजिंग पॉइंट है उससे बिलो अगर टेम्परेचर मेजर करना है तो तब भी हम ये लिक्विड यूज कर सकते हैं। These liquids have further advantage of superior readability to mercury when colored with inert dye and of low cost. However, they have low boiling points, greater tendency to separate in capillary and wetting glass characteristics. The range of application of different liquids in stated in this table. This is the range for different liquids. You can pause and check the range for different liquid. The choice in the type of glass used is a matter of economics influenced by the range of thermometer. Higher the range, higher will be the cost. We can see the highest range we will get in the mercury for temperature up to 450 degrees centigrade. Normal glass is used, and at high temperature up to 520 the borosilicate glass is used. Above this temperature the quartz thermometers have been used, but they are not common. Now, there are some salient features or characteristics of this liquid in glass thermometer.
That is the simplicity of use and relatively low cost. They are portable. We can take it anywhere from one place to another. चेकिंग फिजिबल फिजिकल डैमेज, वी कैन विजुअली चेक अगर फिजिकली डैमेज हुआ है तो। फिर कोई भी ऑक्सिलरी पावर चाहिए नहीं, इलेक्ट्रिक सप्लाई हमको नहीं चाहिए। फिर नो नीड फॉर एडिशनल इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, एडिशनल इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी हमको नहीं चाहिए। फिर फ्रेजाइल कंस्ट्रक्शन उसका है, ठीक है, फ्रेजाइल है, ये इजीली ब्रेक हो सकता है क्योंकि ग्लास का बना हुआ है। बट जो रेंज है वो डिसएडवांटेज ये भी है कि उसकी जो रेंज है वो 600 तक ही लिमिटेड है। फिर लैक ऑफ अडेप्टिबिलिटी टू रिमोट रीडिंग, फिर जो रिमोट रीडिंग के लिए वो लैक करता है कि उसका रीडिंग कैसे लिया जाएगा। एंड द टाइम लैग बिटवीन द चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड थर्मोमीटर रिस्पॉन्सेस ड्यू टू रिलेटिव हाई हीट कैपेसिटी ऑफ बल्ब। जो टाइम लैग है वो टेम्परेचर में जो भी चेंजेस हो रहा है उसकी वजह से, एंड थर्मोमीटर रिस्पॉन्स ड्यू टू रिलेटिवली हाई हीट कैपेसिटी ऑफ बल्ब, जो भी हाई हीट कैपेसिटी है उसकी वजह से। So this is about the liquid in glass thermometer. Next is bimetallic strip. I will explain in the next lecture. So this is it for today's lecture. Thank you very much for listening me carefully. Have a nice day.